Hello everyone. Today we will solve a few most important MCQs on our Indian Evidence Act 1872. Okay, so those who are preparing for All India Bar examination this year, this video lecture will be very helpful to you all. Okay, so without any further delay, let's start today's session. Okay, see the first question is our law of evidence is options are lex telinins, lex fori, and lex loci solutionis, and lex citus. Okay, so the correct answer would be our lex fori. Okay, so the correct answer would be our lex fori, that is law of the land. Okay, so in this case, option B would be the correct answer. Okay, so now moving to next question. Now moving to next question. Next question is our law of evidence is. Okay, options are substantive law and adjective law, both A and B, neither A and B. तो लॉ ऑफ एविडेंस क्या है हम लोगों का? इज सब्सटेंटिव लॉ एंड एडजेक्टिव लॉ, बोथ ए एंड बी, and neither कुछ भी नहीं. Okay, so the correct answer would be our option B, that is law of evidence is an adjective law. Okay, लॉ ऑफ एविडेंस क्या है? लॉ ऑफ एविडेंस हम लोग का एक एडजेक्टिव लॉ है. ठीक है, ठीक है ये. सो इन दिस केस क्या होगा? इन दिस केस ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर फैक्ट कैन बी. ओके, फैक्ट जो हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट में फैक्ट दिया गया है, क्या बोला है? देखिए फैक्ट कैन बी ऑप्शन सर फिजिकल फैक्ट, psychological fact, physical as well as psychological fact, and physical fact not psychological fact. Okay, so as per the provision of Indian Evidence Act, fact can be our both physical and as well as psychological fact. Okay, physical भी हो सकता है, then psychological भी हो सकता है. So in this case, option B would be the correct answer. Okay, now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. ओके, फैक्ट मीन्स फैक्ट क्या है? देखिए ओके, फैक्ट क्या है? ऑप्शन आर फैक्टम प्रोवेंडम, फैक्टम प्रोवेंस, बोथ फैक्टम प्रोवेंडम एंड फैक्टम प्रोवेंस, एंड नॉन ऑफ द एबव. सो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो हम लोग का फैक्ट दिया है, उसका मीनिंग क्या है? सो द करेक्ट आंसर वुड बी आवर ऑप्शन सी, दैट इज बोथ फैक्टम प्रोवेंडम एंड फैक्टम प्रोवेंस. ओके, जो फैक्ट का मीनिंग फैक्टम प्रोवेंडम भी होता है, फैक्टम प्रोवेंस का भी होता है. ठीक है, so in the next few videos I will explain those terms. Okay, that what does mean factum provendum, what does mean factum province. Okay, अगर मैं इसी वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए. ठीक है, सो फॉर द बेसिक फॉर डूइंग एमसीक्यू. Okay, for doing MCQs in all India bar examination, just you have to solve multiple MCQs. Okay, so in this case the correct answer would be option C. Okay, now moving to next question. Next question is our fact in issue. Okay, fact in issue means, fact in issue means क्या है? देखिए, so options are देखिए क्या है? Fact, existence or non-existence of which is admitted by the parties. Option B, fact, existence or non-existence of which is disputed by the parties. Okay, option C, fact, existence, non-existence of which is not disputed by the parties, and all of the above. So the correct answer would be our option B. ओके, सो फैक्ट इशू क्या है? फैक्ट, जो फैक्ट उसका एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच इज डिस्प्यूटेड. अगर किसी एक फैक्ट को लेके उसका एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, तो वही हम लोग का क्या होगा? फैक्ट इन इशू. ओके, फैक्ट इन इशू. ओके, अगर डिस्प्यूट चल रहा है दैट मीन्स क्या? देखिए, अगर सपोज, दैट मीन्स अगर सपोज डिस्प्यूट चल रहा है. ठीक है, अगर डिस्प्यूट चल रहा है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्ट इन इशू. ओके, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सपोज इधर तो डिस्प्यूट है इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फैक्ट इन इशू. अगर देयर इज नो डिस्प्यूट, नो डिस्प्यूट, ये बेसिक
कॉन्सेप्ट देखिए, अगर नो डिस्प्यूट है तो क्या होगा, ये तो फैक्ट एंड इशू नहीं होगा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फैक्ट। समझ में आया? देखिए दिस मीन्स अगर नो डिस्प्यूट है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्ट, एंड अगर कोई भी एक फैक्ट को लेकर कोई डिस्प्यूट है देन इन दैट केस, अगर कोई भी एक फैक्ट को लेकर डिस्प्यूट है देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज फैक्ट इन इशू। ओके, देन इन दिस केस it will be considered as fact in issue. Okay, now moving to next question. Next question देखिए, एविडेंस ओके अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। ओके, क्या है देखिए, ऑप्शंस आर गिवन, ocular evidence, documentary evidence, ocular and documentary evidence both, ocular evidence based on the documents only. Okay, so the correct answer would be our option C. Okay, so correct answer would be option C. That means इंडियन एविडेंस एक्ट में जो हम लोग का एविडेंस दिया गया है वो उसका मतलब क्या है, इधर हम लोग का ओक्यूलर भी है एंड डॉक्यूमेंट्री भी है, ठीक है, दोनों के बारे में बोला गया है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इन दिस केस option C would be the correct answer. Okay, option C would be the correct answer. Okay, now moving to next question. Next question देखिए, several classes of facts which are connected with the transactions in a particular mode, okay, are relevant to section 6 of the Indian Evidence Act, section 7 of the Indian Evidence Act, section 8 of the Indian Evidence Act, section 9 of the Indian Evidence Act. So if you read the provisions of Indian Evidence Act, that is Indian Evidence Act 1872 है, ऑफ सेक्शन 7। ओके, सेक्शन 7 अगर पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को इधर लिखा गया है कि सेवरल क्लासेस ऑफ फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड ओके विथ ट्रांजैक्शंस, ओके, ट्रांजैक्शन इन पार्टिकुलर मोड। ओके, सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। ओके, दैट मीन्स सो इन दिस केस करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, motives, this is very important question, motives of preparation and conduct are relevant under which of the following? Okay, so options are under section 6 of the Indian Evidence Act, under section 7 of the Indian Evidence Act, under section 8 of the Indian Evidence Act, and under section 9 of the Indian Evidence Act. So the correct option would be our option 8. Okay, so option 8 में क्या दिया गया है, ऑप्शन 8 में सब मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, ये सभी का बारे में मेंशन कहाँ पर किया गया है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इन दिस केस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Okay, so in this case option C would be the correct answer. Okay, now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ओके, ऑप्शंस आर देखिए, मोटिव इज रेलिवेंट, प्रिपरेशन इज रेलिवेंट, कंडक्ट इज रेलिवेंट, ओके, ऑल ऑफ द एबव। So if you read the provisions of section 8 of Indian Evidence Act, in that section we get that motive and preparation and conduct, ये तीनों के तीनों are relevant, all are क्या, all are क्या, all are relevant। okay, all are relevant। okay, under section which section, under section 8 of Indian Evidence Act। so in this case the correct answer would be option D, that is all of the above। so in this case the option D would be the correct answer। okay, now moving to next question। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, for conduct to be relevant under section 8 of the Indian Evidence Act, okay, must be previous, must be subsequent, may be either previous or subsequent, only subsequent and non previous। okay, not maybe either previous or subsequent, option D only subsequent and not previous। so correct option would be our option C, that is maybe either previous भी हो सकते और subsequent भी हो सकते। क्या हो सकता है, ये जो conduct है, so as per section 8 of the Indian Evidence Act, ये जो conduct जिस conduct को relevant माना गया है वो conduct क्या है, it may be, okay, ये may भी हो सकता है क्या, previous कंडक्ट भी हो सकते हैं और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, प्रीवियस भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। सो इन दिस केस विच ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर, इन दिस केस ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is about facts which are necessary to explain or introduce relevant fact of place, name, date, relationship, and identity of parties are relevant under which of the following sections? Okay, so the options are Section 8 of the Indian Evidence Act, Section 9 of the Indian Evidence Act, Section 10 of the Indian Evidence Act, and Section 11 of the Indian Evidence Act. Okay, so the correct option would be our option B, that is section 9 of the Indian Evidence Act. जितना भी है फैक्ट्स, जैसे फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लेस, नेम, डेट, रिलेशनशिप, ये सभी के सभी कहाँ पर कौन सा रिलेवेंट है, अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 9, ओके, 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. Okay, so in this case option B would be the correct answer. Okay, now moving to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. क्या देखिए, द आइडेंटिफिकेशन पीरियड ऑफ सस्पेक्ट्स आर रेलिवेंट, द आइडेंटिफिकेशन पीरियड ऑफ chattels are relevant, both A and B are relevant, only A not B is relevant. So in this case the correct answer would be option C, that is both identification period and identification period of chattels. Okay, chattels and suspects both are relevant. So in this case, option C would be the correct answer. Okay, option C would be the correct answer. Okay, now moving to next 14A of the Indian Evidence Act is related to which of the following? Options are presumption as to abatement of suicide by married woman, presumption as to the absence of consent in certain prosecution for rape, presumption as to abatement of suicide by woman, none of the above. So the correct option would be our option B. That means section 144 is has laid down the provision regarding presumption as to the absence of consent. Okay, in certain prosecution of rape. So in this case, option B would be the correct answer. Now move to next question. Next question is under which of the following sections of the Indian Evidence Act opinion as to the handwriting has been considered to be relevant? Options are section 100, section 47, section 48, section 53A, section 56. So the correct option would be our section A, that is section 47 of the Indian Evidence Act. So in this case, correct option would be option A. Now on to next question. Next question is which of the following section of Indian Evidence Act 1872 contains provision regarding cross examination and re-examination witness character? Options are section 142, section 140, section 139, section 141. So correct option would be option B, that is section 141. So here the correct option would be option B. So now on to next question. This is the next question and the last question. Okay, uh, which of the following is not correctly matched? Okay, options are hostile witness, section 154, this is correct. Burden of proof as to ownership, section 110, this is also correct. Refreshing memory, section 139, this is also correct. Professional communication, section 124, this is incorrect. Okay, that is professional communication has been defined under section which? Under section 126 of the Indian Evidence Act. So so the correct option would be option D. Okay, option D. So in this case, the correct option would be option D. So this is for all today. If you liked this lecture, please like this video and subscribe this channel. Okay, for example, I have already started MCQs on Constitution, CRPC, BNSS, and so on. So if you don't want to miss any of this lecture, please subscribe this channel. Okay, thank you. Thank you.